महाराष्ट्र प्रदेश में करीब 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वोडाफोन कर चुकी है और निरंतर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है। पिछले साल की अगर बात करूं तो 680 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने लास्ट ईयर महाराष्ट्र में किया है। नियरली अबाउट 1.95 करोड़ कस्टमर वोडाफोन के हैं आज के दिन में महाराष्ट्र के नेटवर्क में, और 870 हमारे वोडाफोन स्टोर्स और मिनी स्टोर्स हैं जो सर्विस नेटवर्क हमने क्रिएट किया है अक्रॉस महाराष्ट्र में। सो ये एक जनरल आपको मैं एक बताना चाहता था कि बिजनेस एरियाज़ में हम कैसे मूव किए हैं। बट आज की कॉन्फ्रेंस या आज की मीटिंग जो हमने रखी है ये बिजनेस एरिया से थोड़ी सी हटके है। आज के दिन हम ये बात करना चाहते हैं कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वोडाफोन क्या प्रयास कर रही है और उन प्रयासों का क्या नतीजा हमें मिला है और उसको हम आगे कैसे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं अगर पिछले कुछ सालों की बात करूं तो वोडाफोन का प्रयास हमेशा ये रहा है कि वोडाफोन कैसे टेलीकॉम के जरिए सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट करे और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ वोडाफोन जुड़े और कुछ नया क्रिएट करे जिससे सोसाइटी का बेटरमेंट हो, सोसाइटी का भला हो, और हम अपनी तरफ से कैसे वो ट्रेंड सेट कर पाएँ। तो कुछ एग्जाम्पल जो पिछले 3 या 4 सालों में हमने महाराष्ट्र में किए, मैं पहले उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हम नया प्रयास लॉन्च करना चाह रहे हैं आज के, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पंढरपुर यात्रा के बारे में आप सब जने जानते हैं, पुणे से ही वो ओरिजिनेट होती है, यहाँ से पंढरपुर जाती है। वोडाफोन ने कैसे टेलीकॉम को इस यात्रा से जोड़ा और कैसे जो वर्करी आज के दिन में ये यात्रा पूरी करते हैं उनमें कैसे वोडाफोन का छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहा, ये हम एक एवी के जरिए देखना चाहेंगे। सो कैन वी हैव द एवी प्लीज? कैन कट आउट द लाइट से थोड़ा। One of the largest spiritual gatherings in India. Each year, over 9 lakh devotees converge for a pilgrimage on foot to Pandharpur, the holy town of the Varkaris. Over the course of a month, the young and old all walk a distance of over 500 kilometers. They brave the heat and rain, driven by their devotion. On the road, facilities are few and far between. Connecting with loved ones back home is difficult. To help the faithful along the way, those with mobile phones could charge them at the van for free. The Vodafone free calling van. Here, they could make phone calls completely free of charge. 4 specially equipped Vodafone vans accompanied the pilgrims along their journey. Now, they could stay connected with their families back home and continue their journey with peace of mind. लेकिन अभी फोन किया तो बहुत अच्छा, उनको भी अच्छा तकलीफ, उनके दिल को भी तकलीफ अच्छी हो और मुझे भी तसल्ली अच्छी। We even introduced them to Vodafone M-Pesa, through which they could send and receive money straight from their mobile phones. वाईट केल्यानंतर पहिल्यांदा M-Pesa हे घेणार वोडाफोनच्या सिम कार्ड वरती, ते यूज करणार। आता फोन करतो घरी, लेकरायला यायला बोलतो, कुशाली विचारतो, आम्ही चांगले म्हणून वारीत चाललो म्हणतो. Vodafone helped pilgrims connect with their loved ones back home, making their sacred journey a little more convenient. जब से आपने गाड़ी लगाया इधर, 1-1.5 लाख भाविक तो भी इधर से कॉलिंग करके गए, उससे उन लोगों का बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। लाखों लोकांसाठी जे तुम्ही हे मोफत उपक्रम राबवलात त्याबद्दल तुम्हाला लाखो धन्यवाद। So, Vodafone is connected with Pandharpur Yatra from last 5 years, and every year 2 से 4 वैन वर्करीज के साथ पूना से लेके पंढरपुर की यात्रा करते हैं साथ में, और यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं टेलीकॉम से रिलेटेड है वो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी वर्करीज जा रहे हैं उनको प्राप्त हो पाए।
दूसरा इनिशिएटिव बहुत इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने पिछली बार लॉन्च किया, लास्ट ईयर लॉन्च किया, सूखा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में, कुछ एरियाज ऑफ महाराष्ट्र के, और कैसे एक सिंपल होर्डिंग को या एक सिंपल डिवाइस को अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइस बना सकते हैं। वोडाफोन ने ऐसा एक प्रयास करके दिखाया लोगों को कि किसी भी चीज़ को अगर आप होर्डिंग को एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग होर्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कन्वर्ट करके वाटर कंजर्वेशन अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं। सो वोडाफोन ने वर्ल्ड का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग होर्डिंग लॉन्च किया लास्ट ईयर। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो कैन वी हैव द AV प्लीज? It's Maharashtra's heart of darkness. Marathwada has seen 555 farmer suicides in the last 8 months. A huge number of farmers from Maharashtra, India are committing suicide because of the drought. Their farming land becomes a barren land and the whole family suffers a huge poverty. शेतीमध्ये पाण्याचा खूप प्रॉब्लेम आहे आणि पाऊस पडून येत काही नाही. They only pray for the rains. Vodafone, the country's top mobile service provider, came forward to help the farmers. Presenting the rainwater harvesting service. A simple and effective mechanism on top of each billboard. A U-curved aluminum sheet as a rainwater collection funnel on top of the billboards. This funnel is then channeled to a big tank installed at the bottom of each billboard, which stores the collected rainwater. To keep a track of water levels in each water tank, a unique Vodafone SIM-based water sensor technology was created. Once the tanks were full, they sent out an SMS to the admin. These water sensors were placed on each tank. This rainwater was then transported to help the drought-affected regions and the farmers. More than 20,000 liters of rainwater was donated, which helped the farmers. Now, any billboard can help in rainwater harvesting. Most importantly, the barren land is now transformed again into farming land. इस इनिशिएटिव को जो वोडाफोन ने लिया, हमें बहुत सराहना मिली देश में विदेश में। इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को बहुत सराहाया गया और अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अलग अलग एरियाज़ को रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइस में कन्वर्ट कर पाएँ। टेक्नोलॉजी का हमने इसमें इस्तेमाल किया कि कैसे पता चले कि जब टंकी भर गई है तो उसका मैसेज पहुँचे और इमीडिएटली उसको लिया जाए और जहाँ पे भी रेन अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पहुँचाया जाए। तीसरा जो बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया, जिसके लिए हम बहुत ही इमोशनल हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हम जिससे जुड़े हुए हैं और वोडाफोन बिलीव करती है कि सस्टेनेबल तरीके से हमें बिजनेस करना चाहिए। सो वोडाफोन के जितने भी ऑफिसेज हैं वो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं बिकॉज ऑफ लाइटिंग्स, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज़, टावर दैट वी यूज़। वोडाफोन ने आज से 3 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया कि जितना भी हम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं हमें उतनी ही ऑक्सीजन जनरेट करनी चाहिए टू बिकम अ कार्बन फुटप्रिंट न्यूट्रल। और इस के तहत वोडाफोन ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने 3 साल में 3 लाख पेड़ प्लांट किए। कान्हा से पेंच के बीच में कॉरिडोर बनाई हमने, जिसने कि इस पूरे एरिया को ग्रीन बनाया। जितना भी वहाँ पे टाइगर हैबिटेट है, ये कॉरिडोर बनी जो कि इंडिया की पहली टाइगर हैबिटेट कॉरिडोर बनी है कान्हा और पेंच नेशनल पार्क्स के बीच में, ताकि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो उस एरिया में बढ़े। प्लस ये जितने भी प्लांटेशन किए गए उससे जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़े, क्योंकि जितने भी ये प्लांटेशन किए गए ये सारी ऐसे प्लांटेशन किए गए जो अगर वहाँ के लोकल विलेजर्स हैं इसको प्रमोट करें तो उसकी प्रोड्यूस से वो अपना घर का खर्चा चला पाएँ।
तो ऐसा इनिशिएटिव हमने पिछले 3 साल में किया एनवायरनमेंट को प्रोग्रेस करने के लिए, एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए। एक छोटी सी ग्लिम्स मैं आपको देना चाहूँगा इस इनिशिएटिव के बारे में। कैन वी हैव द AV प्लीज फॉर दिस आल्सो। Vodafone's India offices generate approximately 33 million kilograms of carbon dioxide emissions each year. Our carbon footprint contributes to global warming, which is fueled by rampant deforestation and destruction of green cover. Tree planting is an important element in the solution to tackle climate change. Trees absorb carbon dioxide and are vital carbon sinks. We can offset the carbon footprint generated by our offices by planting 100,000 trees annually. Besides offsetting our carbon footprint, it will also offer livelihood to tribal and rural communities, provide flowers, fruits, fuel and fodder, help in wildlife conservation, improve the underground water table by increasing the catchment areas, help in lowering air temperature. This initiative will create a high social impact which goes much beyond reducing Vodafone's carbon footprint. Hence, Vodafone has partnered with growtrees.com, a social enterprise focused on planting trees. They will plant 300,000 trees over 3 years in the Kana-Pench corridor between 2 Tiger Reserve wildlife sanctuaries in Madhya Pradesh and Maharashtra on the forest land covering approximately 100 hectares. This is the first such corridor project in India to facilitate wildlife movement and expand territories, thereby providing habitat connectivity in tiger breeding areas. By doing this, we will not only neutralize our carbon footprint for Vodafone offices in India for the next 3 years, but this will also help in increasing the green cover in this crucial forest area, thereby helping in conserving tigers. Vodafone's India, India's Vodafone. और इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए हम एक नया इनिशिएटिव आज आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसा कि कुमार ने बताया, गणपति हमारे बहुत क्लोज हैं। गणपति उत्सव पुणे में सबसे बड़ा उत्सव है और आज के दिन में हमारी ये प्रयास रहता है साल दर साल कि हम कैसे गणपति उत्सव में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन करें और कैसे इस फेस्टिवल को और ज़्यादा एन्जॉयबल और ज़्यादा वाइडर और ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाएं। सो कुछ पुराने इनिशिएटिव्स हमने LED ढोल इंट्रोड्यूस किए टू इंक्रीज द विजिबिलिटी। हमने गणपति को डिजिटल लेके गए हम। लास्ट ईयर हमने कैंपेन लॉन्च करी सेल्फी विद गणपति। सो आप गणपति पूजा करिए, उसमें आप अपने फ़ोटो खींचिए, उसको डिजिटल बनाइए, जो भी आप अपने यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसको डिजिटल बनाइए और सोशल मीडिया पे ले जाइए ताकि दुनिया भर के लोग जानें कि गणपति फेस्टिवल क्या होता है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है और महाराष्ट्र में इसका क्या महत्व है। तो इसको हमने आगे बढ़ाया। इस साल हम लोगों ने ये देखा कि हम पिछले 2-3 साल से इनफैक्ट ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पुणे की जो सिटीजन हैं वो अवेयर होते जा रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में और वो चाहते हैं कि ये फेस्टिवल वो इको फ्रेंडली तरीके से बनाएं। और पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज पिछले 3 साल से ये प्रयास कर रही है कि कैसे लोगों को हेल्प करे इको फ्रेंडली तरीके से विसर्जन करने में, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि जब हम विसर्जन करते हैं वाटर बॉडीज़ में तो उसके कुछ एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स हमारे रिवर सिस्टम का या तालाबों का या उस पर एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रयास PMC और NCL पिछले 2-3 सालों से कर रही है और उस प्रयास को देख के हमें लगा कि हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ और हम कैसे इस प्रयास को हर सिटीज़न के पास तक ले जा पाएँ। तो अगर मैं महाराष्ट्र की आज के दिन में बात करूँ, हम सबसे पहली पहल पुणे से ये कर रहे हैं इस साल से। हमारे कई सारे वोडाफोन स्टोर्स हैं यहाँ पे।